राउडी होने का मतलब हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा होता था कि बटन खोले बिना टाई पहन ले या थोड़ी सी टाई ढीली कर ली. Right, in China, people don't know who is a chacha, who is a bua, who is a mama because वो एक ही child है सारी families में. मेरे एक बैचमेट ने फुटबॉल खेल रहे थे हम ऐसी टूर्नामेंट और गलती से हाथ निकाला और हाथ लग गई और पेनल्टी हुआ. उसके मुंह से शिट निकल गया. अब आप समझिए आज की तारीख में जनरेशन में किसी को आप बोलते हैं तो कोई बुरा भी ना माने, बट बेजल सर ने उसको रेड कार्ड दिया. Life insurance for a young family, especially where the earning members is extremely important for the cash flows and the assets of the family. It is extremely important to have life insurance. We can go up to 10 crores of sum assured, depending on the paperwork, medical requirements, and there are certain risk parameters. But there would be cases up to 10, maybe 1, 2, 3 CR, depending on the need and those papers. We can go ahead. No salary slips required. As Elon Musk says, right? Correct. Population is not an issue. Underpopulation will be the major issue. Hi everyone, welcome to another episode of Life Uncovered with Vaibhav. Today I have a very dear friend of mine, Raunak Singhvi, sitting with me. Raunak and I go back to class 5th days of mine. We used to play cricket. We were neighbors staying in the same sector, and now he is the CEO of Grey Matter Capital, which is an impact investing foundation. It's not a venture fund, and that's another thing we'll discuss, why is it different and everything. But Raunak and I have got a very interesting journey. We have traveled across the globe. Raunak actually at one point of time was traveling across 24 cities, 20 plus countries, 5 continents within a month. From that stage to right now, he's building his house in Jodhpur. As of now, he spends a lot of time in Jodhpur, but travels as well. So interesting stories and interesting discussions. Welcome to the podcast. Yeah, thanks, Vaibhav. Happy to be here and long time. Long time. Absolutely. We have been discussing, but long time. So, first few things about our childhood, because जब भी देखता हूँ, I still have a time lapse kind of thing. And I was talking to my wife and I said, this is what I've realized at this age is actually the time machine, where I can close my eyes and go and live in 1990, 92, 93 kind of thing. That ground behind your house, जहाँ पे अब तो खैर काफ़ी construction हो गई चीज़ें हो गई, but we used to play cricket. लोगों को आवाज़ दे दे के बाहर से बुलाते थे, रौनक बाहर निकलो, ये बाहर निकलो. To a time where we are sitting like this, and I think roads are congested, everything is congested, but good days. Any memories that come back to you of those days? Yeah, so a lot of good memories. I guess one of the biggest bluff जो सबके साथ होता है कि अभी पढ़ लो बाद में जिंदगी पर आराम होगा, is the biggest bluff. The childhood is the best time, best period. I always say to my son as well, now he is in grade 10, so उसको ये कहता हूँ कि अभी enjoy कर लो, बाद में तो काम ही करना है. You will not be able to, ये सबसे बड़ा fraud है जो भी कहता है कि ना अभी पढ़ लो, बाद में ज़िंदगी भर आराम है. This time the childhood never comes back. The childhood never comes back. And yeah, I feel nostalgic. जब मैं जोधपुर भी हमेशा आना चाहता था, तो मैं जब आया post COVID, तो उसी रीज़न से आया था कि because वो memories हम भूल नहीं पाते हैं कि मतलब I have traveled, as you said, to multiple countries, lived in multiple cities. मतलब even in India, I have been in 5-6 cities as I call myself a white collar migrant. क्योंकि we are migrants. If we are outside our base, we are all migrants, right? So always a nostalgia to be at your place. So that is where I believe all those are our past, and those are our identities as well. Correct. So I completely agree. I think वो जो childhood के friendships होती हैं, वो are the strongest and the most, I would say, selfless और एकदम मतलब बस बैठे हैं, चलो खेल के आते हैं. There is no judgment. कोई judgment नहीं. अभी इनफैक्ट अभी यही मैं बता रहा था ना कि कितनी सारी चीज़ें मेरे को बहुत बाद में पता चली. अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में, ऐसा भी होता है. कास्ट सिस्टम हो या पेरेंट्स क्या काम करते हैं. मेरे को तो कई लोगों के पेरेंट्स को पता ही नहीं था क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था. अपन बस खेल रहे होते थे. हाँ नहीं, और उसके मेरे ख्याल से लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड. सी एक्चुअली जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग छोटे थे, तो जैसे यूनिफॉर्म्स होती हैं वो एक रखी इसलिए जाती है कि किसी में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाए. करेक्ट. तो वैसे भी उस टाइम में देयर वर नॉट मेनी ब्रांड्स. करेक्ट. देयर वर, बिकॉज इट वाज लाइक
in 90s you didn't have liberalization, right? Liberalization हो रहा था, तो जोधपुर तक लिबरलाइजेशन पहुंचा ही नहीं था, मतलब it was the starting point, right? Correct. तो आपके पास कार के ऑप्शंस ही लिमिटेड थे. Correct. सब टू व्हीलर्स पे जाते थे, साइकिल्स पे ही जाते थे. Correct. और ब्रांड्स नहीं होते थे. अगर आपका शर्ट कौन से ब्रांड का है, क्योंकि सब टेलर से सिलाते थे. सब टेलर से होते थे. तो आपके पास डिफरेंशिएट करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे. Correct. अब क्या है, अनफॉर्चुनेटली इन टुडेज वर्ल्ड the good part is that things have moved on considerably, but then judgment has happened. Correct. People are able to judge you कि अच्छा आपने कौन सा ब्रांड पहना है, आपके शूज़ कौन से हैं. वो उस टाइम में होता नहीं था, तो हम किसी को जज करते ही नहीं थे, क्योंकि हमको खुद को ही नहीं पता था कि सब अच्छा एक ही शर्ट, एक ही तरह का शर्ट है, एक ही तरह के शूज़ हैं, तो कोई जजमेंट का क्राइटेरिया ही नहीं होता था. हाउ वुड यू जज एनीवन? करेक्ट. आई थिंक अभी नाउ दैट यू हैव सेड, एक चीज़ जो मैंने कभी कभार सोचता हूँ, अभी सोची नहीं थी, बट बिकॉज यू सेड DCM का 27 शेड की ग्रे पैंट होती थी पॉल्स की, वाइट शर्ट होती थी, टाई बेल्ट, सिंपल यूनिफॉर्म में, सॉक्स में SPS क्योंकि सेंट पॉल स्कूल लिखा होता था, और जूते आप कोई भी ला सकते थे. टिल द टाइम इट वाज ब्लैक ऑक्सफोर्ड एंड लेदर शूज. ये रबड़ के शूज और वो सब आजकल अलाउड है, वेलक्रो और वो सब कुछ भी अलाउड नहीं था. प्रॉपर लेदर शूज लेस के साथ और सब, और पॉलिश्ड. और ऐसा भी नहीं कि पीछे है ना, पीछे भी पॉलिश होनी चाहिए थी, यानी कि आगे पॉलिश. सो एवरीथिंग वाज स्ट्रक्चर्ड दैट वे. बट उसी समय व्हाट आई ऑल्सो रियलाइज्ड इज, किसी और से भी मैं जो बात कर रहा था, उनका थॉट ये था कि राउडी होने का मतलब हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा होता था कि बटन खोले बिना टाई पहन ले, या थोड़ी सी टाई ढीली कर ली. बट यू नो आवर स्कूल हैड गिवन अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अलॉन्ग विद यूनिफॉर्म दे यूज्ड टू बी सिस्टम ऑफ असेंबली सवेरे. ये आज की तारीख में, आई डोंट नो अबाउट योर सन स्कूल, बट ज़्यादातर स्कूल्स में मैंने देखा असेंबली सिस्टम काफ़ी हद तक डेड हो गया है. बिकॉज वो इतना, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉन अप कंसिडरेबली इन स्कूल्स. करेक्ट. तो कई जगह आई अंडरस्टैंड कि वीक में एक बार असेंबली, या महीने में 2 बार असेंबली, मतलब फोर्टनाइट में एक बार असेंबली टाइप ही सिस्टम हो गया है. देयर इज़ नो, जहाँ हम लोग रोज़ असेंबली सुबह करते थे और फिर क्लास में जाते थे. आई डोंट थिंक इट हैपन्स एनी मोर, at least in my son's school as well. So वो बोलते हैं आज असेंबली है. असेंबली मतलब आज असेंबली है का मतलब कि नहीं हमारे असेंबली रोज नहीं होती है. तो obviously things have changed a lot in today's time, and students see also, again students are a lot more aware. So मतलब हम लोग, जैसे आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, राइट? तो आई डोंट नो इफ यू रिकॉल, आई एम श्योर यू विल रिकॉल, हमारे इवनिंग गेम्स होते थे. करेक्ट. राइट. और हमारे जब टूर्नामेंट्स होते थे, इंटर क्लास टूर्नामेंट्स, करेक्ट, आपको -5 मिलता था अगर आपने हिंदी में बात कर ली. हाँ. राइट. मतलब वी हैव लॉस्ट मैचेस बिकॉज वो हमने 25 रन बनाए, 15 रन तो अरे तू क्या कर रहा है कर बोला और आपके नंबर कट गए. राइट. सो आई स्टिल रिकॉल द डिसिप्लिन एनफोर्स करने के तरीके बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे. बिल्कुल. राइट. इनफैक्ट इसी पे एक मैं और चीज़ बोलूँगा. देखो आज तक ध्यान है, मेरे एक बैचमेट ने फुटबॉल खेल रहे थे हम ऐसी टूर्नामेंट, और गलती से हाथ निकाला और हाथ लग गई और पेनल्टी हुआ, उसके मुंह से शिट निकल गया. अब आप समझिए आज की तारीख में जनरेशन में किसी को आप बोलते हैं ये तो कोई बुरा भी ना माने, बट बेजल सर ने उसको रेड कार्ड दिया. ही वॉज आउट ऑफ द गेम एंड आवर टीम केम डाउन टू 10 पीपल बिकॉज उसके मुंह से शिट निकल गया. अब जो आई डोंट, मतलब होना चाहिए था, बट ये डिसिप्लिन की बात होती है कि आपको क्या वर्ड्स भी निकल रहे हैं, एग्जैक्टली हैव टू बी कंट्रोल्ड. एंड असेंबली में क्या होता था अपने टाइम पे, मॉर्निंग स्टार्टेड विद अ प्रेयर फॉलोड बाय अ न्यूज़. देयर वुड बी समवन हर दिन असाइंड होता था, उसको आके न्यूज़ सुनानी होती थी, डेली न्यूज़. फिर फॉलोड बाय थॉट ऑफ द डे, कुछ एक आपका थॉट. एंड ये 3-4 चीज़ों के बाद आप क्लास में जाते थे. सबसे पहला पीरियड होता था मॉरल साइंस का. ठीक है, आपने एक मॉरल्स बेशक कितना भी आप सीखो, बट कुछ थी हम में अंदर. आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा एक बार भी मेरा स्कूल में से टिफ़िन, वाटर बॉटल, जैकेट या कुछ खोया नहीं कि कोई चुरा के ले गया हो. पेन्स भी जैसे होते थे वैसे ही पड़े रहते थे. आज की तारीख में आई सी, अपने पर्सनल घर में एग्जांपल में देख रहा हूँ, ये विंटर्स आए हुए 4 महीने हुए हैं, मेरे बेटे के स्कूल से 2 बार उसका जैकेट चोरी हो चुका है. एंड नो वन इज़ लाइक एफ्लुएंट फैमिली से नहीं है, अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, बट इट्स अबाउट मॉरल साइंस बीइंग नॉट गिवन. तो थोड़ा मेरे को लग रहा है थोड़ा डिके इन मॉरल में भी, बोलचाल में, जैसे आपने डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, ये वो भी हो रहा है विद थोड़ा ओपन सिचुएशन. हाँ, बिकॉज एवरीबडी has too many things to handle right now. Even parents are busy because social life कई
पेरेंट्स आर वर्किंग, कई जगह ये भी प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं. फैमिलीज हैव बिकम न्यूक्लियर, दे डोंट हैव ओवरसाइट ऑफ द लार्जर फैमिली. सो आई गेस देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई किड्स हैव बिकम लॉट मोर इम्पेशेंट. और प्लस उनको ना सुनने की आदत नहीं है. हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि उनको ना सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब कभी मना ही नहीं सुना है, तो उनको ना सुनने की आदत नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ में जाएंगे तो दे विल बेसिकली एक्ट एज अ रेबल कि ये हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है. एंड दैट इज़ व्हाट इम्पेशेंस इज, वी कैन सी ऑल अराउंड, राइट. एंड प्लस दिस फोमो जिसे बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट. एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप. तो अगर उसमें कुछ गलत भी हो रहा है, तो हम मॉरल साइंस की क्योंकि आपने बात की, पीपल एक्चुअली गेट इन्वॉल्व्ड only because they want to be part of the group. They don't know whether it's right or wrong. They may actually know that it is wrong. To be not part of that group is actually the right decision, but because they feel left out. Yes. Because families छोटी हो रही हैं, पहले बच्चे ज़्यादा होते थे, अब बच्चे कम हो रहे हैं. तो ये सारे implications हैं. I don't know if you know, चाइना का सबसे बड़ा जो पहले हम लोग अच्छा बोलते थे, हमको यही समझाया गया कि चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी किया तो बहुत अच्छा किया. राइट नाउ यू सी अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन एवरी ईयर. देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग. इट्स एक्चुअली, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट लास्ट ईयर आई उसके अंदर वो कह रहे हैं कि इट में एक्चुअली गो डाउन टू 500 मिलियन पीपल ओनली. आज की डेट में वो एनीवेयर बिटवीन 1.3 to 1.4 बिलियन होंगे. करेक्ट. बट एट द एंड ऑफ द सेंचुरी दे मे एक्चुअली गो डाउन टू इवन 500 मिलियन पीपल, विच मीन्स 60% of their 60 to 70% of their population decline, only because one child policy के अंदर now you don't have kids. Correct. So that is happening now. That is actually started happening in India as well, right? The birth rate is declining. Correct. So what does that eventually mean? That eventually we will see the peak. There are a lot of research reports now. We will eventually peak in next 15-20 years. So that's why the best period when all the economists say this is a golden period. Golden period because India will have the highest number of working age population in the world. Correct. So a lot of these things, I guess, are linked because of the social things which are happening. People are not thinking about the longer term picture from a humanity, as Elon Musk says, right? Correct. Population is not an issue. Underpopulation will be the major issue. Right? And I completely agree because data and stats support that. And I guess that is a major challenge for the future, I guess, for the future generations is how to, like if, so there is a saying, right, in China, people don't know who is a chacha, who is a bhua, who is a mama because वो एक ही चाइल्ड है सारी फैमिलीज में. सो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पर, बिकॉज हर जगह एक ही चाइल्ड है. तो आपका कोई भी रिलेटिव नहीं है. नोबडी इज योर रिलेटिव प्रैक्टिकली. सो दिस सो मच ऑफ लोनलीनेस. सेम इज हैपेंड इन जापान. अगर आप जापान की हिस्ट्री पढ़ें, व्हाई हैज जापान डिक्लाइंड? जब वो पावर हाउस बने, इकोनॉमिक पावर हाउस वर्ल्ड के इन 1980s, 70s, 80s, राइट, one of the biggest struggle has been the population growth. They have been declining. South Korea has the same problem now. Their population fertility rate has gone down below 8.8. The replacement rate is 2.1. So if you need to maintain the population, it's 2.1. They have gone down to 0.77. Now they themselves have said we'll be probably the first country to, or the where the country will wipe off. They will not have people in 150 years. They will just become extinct as a society because they are not having kids. So again, these are all implications of too much of consumerism, too much of I believe that a lot of people are just focusing on what is in for me today rather than looking at the future. Absolutely. Right? Because it's the me moment which is there, right? And I was also not aware when I got into this current role with Grey Matters Capital. I got to know about a lot of this data because impact investing, we see the data where we need to invest, where we need to put our resources in, right? So that is where I was startled that how the data is speaking a very different story than what we are all seeing or which is not visible to us. Correct. In fact, I wanted to come to Grey Matter Capital only
that these data points are very, very crucial. But why is impact investment thing different from a venture capital? If you can just explain, and then we'll get into grey matter also. So impact investment. So impact investing can happen in two ways generally. Right. So generally we are very similar to a VC from an operations perspective. Correct. Structurally we are very different. So Grey Matters Capital is a impact investing foundation. Foundation practically means a not-for-profit. Yeah. So a lot of people confuse that not-for-profit means that you cannot earn profit. No, that is not right, because the name is a bit of a misnomer. You actually can't distribute dividends. So any not-for-profit can earn profits. It is just that it cannot distribute dividends. There cannot be a beneficial owner. There is no shareholder practically. So you can't distribute dividends to anyone because there is no shareholder. Correct. So whatever profits we earn, we have to invest, redeploy into the mission. Okay. The mission continues to evolve based on so like you would have heard about Bill and Melinda Gates Foundation, yes. right? So that is also a not-for-profit structurally, because Bill Gates or Melinda Gates have donated their wealth, a part of their wealth. Same is with Dell Foundation. There are a lot of foundations in US. Because of tax reasons, a lot of people who want to do good, they create these foundations and they continue to donate their money and support initiatives across the world. So our foundation is a similar foundation based out of US. So if somebody has to understand Grey Matter Capital as a foundation, in just if you have to say that how did it start, what was the thesis behind it, what's the corpus that it was built in, what's the current corpus looking, because if profits are coming in, the corpus would be swelling also. Yeah, so it's a very interesting story. So Grey Matters Capital is a private, the one is a public foundation where you can accept public money. Basically anyone can donate to that foundation. So a lot of these foundations are public foundations, right? Where you and I can also donate money, even if it's $5, $10, we can donate. So it's a private. So Grey Matters Capital is a private foundation, which means that it will not take money from public. Okay. So being a private foundation, actually it was set up by the founder, Bob Patillo. So Bob actually has a very inspiring story. He was a real estate entrepreneur into industrial real estate, and at one point of time, like within the top 10 industrial estate businesses in the US. So, and there is a backstory around why he chose to do it. And he sold his business. So earlier he was experimenting to understand this sector in terms of impact side by giving grants. So he used to give $100,000 grant, $200,000 grant, especially supporting microfinance business in the late 90s. Sure. So he saw that, okay, there is something which is happening there, but at that point of time, microfinance was primarily a grant making business. You basically make grants and give out small hand loans to women. So actually there's a story where his daughter in their church, when she was asked, what does your father do? She said he supports women with hand loans. His daughter was not able to say that he is into real estate. She was able to relate to his work in the microfinance. So that actually moved him. So he decided, okay, this is what probably is for me. So he sold off his entire business in 2003-04, around that period, for around $300 million, $350 million. And he dedicated his time, effort, energy. He was 42 at that point of time, and he sold off his business. Yeah. So, which was fairly young, right? Yeah. But then he decided to start Grey Matters Capital. Okay. And he pledged his practically more than $200 million plus of wealth to Grey Matters Capital over a period of time. And GMC was actually one of the first ones to commit, or it was actually one of the largest equity investors in the microfinance space when the transition from not-for-profit model to a for-profit model was coming in. So all of these Indian microfinance industry, all were not-for-profit till 2005-06. So Bob supported, GMC supported around 24 funds across the world with the seed capital of $80 million of equity. So in fact, most of the Indian small finance banks of today
have been investees of GMC in the past through these funds. So that led to a huge splurge. A lot of other investors came in, and some of these investments have done extremely well. In fact, we still hold a few of those investments even after nearly 20 years. So microfinance was sort of the calling for GMC and Bob to start this. Today we would be supporting, we do all the three, I would say. We do equity, we do debt, and we also do funds. We also support a lot of first-time fund managers, have been supported by Bob and GMC in the past, and we continue to support. Current corpus would be around, based on whatever market, mark to market we will do, because it's a private market, so anywhere between $80 to $100 million. You would say, okay, $200 million, we have come down to 100 because of impact investing. We have been early stage investors. We don't invest in mature businesses. So our target segment is how do we solve few of the most difficult problems in the world. So obviously, when you are the first mover, you always have to incur a lot more cost to actually understand the market, right? So that is where we always believe that our capital has been more catalytic, where we have got other players to come in after us to actually make commercial returns. But obviously there have been some successes. Some, like Indian School Finance Company was the first education-focused finance company in the low-cost housing, the low-cost private school space. So the budget private schools or schools which are having annual fee of less than 25,000 rupees a year, there was no financing model for them. That's what ISFC and Bob started in 2009. We exited that business in 2024. And again, now that was nearly hardly any market in 2009. Today, it's a huge market. Today, it's $1 billion plus book, right? And all because the underwriting was started, right? The entire model for first 2-3 years. And the other fallout was that the first team actually started Varthana, which is the largest player now in the market. So again, the genesis is start from GMC. Very interesting. So if I look at this portion, I've understood. But globally, in which countries are you present? India? So we generally work in global south, which I may say the developing part of the world. So we have investments in Africa, LATAM, India, and South Asia. We also have been early investors in Bcash. We have been investors in MCOPA. We have been also investors. We have also incubated businesses. So we actually have in Pakistan as well. So Pakistan's first and only education finance company has been promoted by us. In 2019, I only sort of worked and found we did the greenfield. We actually trained the team from India. The entire policies were made from India. So it's based out of Lahore, Islamabad. It's based out of Lahore. Now it has supported more than 1,000 plus schools in Pakistan. Again, this is kind of impact we made. We may never get commercial returns from a place like Pakistan. We may find it extremely difficult to even get an exit. But eventually, we have created a mark there where the normal education system has access to capital, which was never a lending target itself. So again, these are kind of in which Nigeria unlock a lot of markets which are not viable in the beginning, but once it reaches a scale, we know that we may never earn. So that's how our capital always shrinks, because we may never earn out of these initiatives. But these initiatives will encourage others to come in. So we actually in that, we have now another impact investor who's put in the capital. But obviously because of COVID and other things, the valuations were lower. But we felt that our objective has been achieved when a mainstream investor has come in, right? It's a fund, so they have put in the capital. So obviously they feel that this extremely relevant model. And that is where we believe that GMC continues to make impact. Right. From an impact perspective, what are your thoughts? Because you have also worked with the insurance industry. What are your thoughts on insurance per se? For someone? So insurance, I guess, is extremely important, especially for people
who have responsibilities, and everybody has responsibilities. Everybody has dependents. So I would say from life and health, these are two major sides of insurance. Anyone who has leveraged, who has taken a loan, needs to have a life insurance, irrespective, right? Because I've seen personally that someone passed away a few years back during COVID. He was not adequately insured, but he at least had a loan insurance on his home loan. Correct. When he passed away, the wife was not working. Two young kids, the home loan just got, or the home become theirs because of the insurance itself. So otherwise it would have been extremely difficult for their family. You can actually, from middle class, you can go to a lower middle class just by an event. Because not everybody has enough savings or cash flows, right? Or even the quality of life has gone down. Same I have observed even before COVID, where I was living in Bangalore. There was a young family. The child was a special child. Father passed away, and it was a nightmare. We actually had to contribute. Because there was a large community. I guess society contributes some 25 lakh rupees because they just didn't have insurance. So I guess life insurance for a young family, especially where the earning members is extremely important for the cash flows and the assets of the family. It is extremely important to have life insurance. Same now, health insurance. Again, there is a lot of instances of cancer and other life-threatening diseases which are coming up, and post-COVID we have seen a lot of untimely demise of even very, very fit people. So health insurance also to take care of the treatments. Correct. So I believe insurance is imperative. But it is extremely important because I worked in insurance. So I've seen a lot of mis-selling happening. Absolutely. In fact, I was one of the reasons why I left insurance. Yes, we have discussed exactly. Was because I thought I did extremely well as a professional. I was doing extremely well. I had like 3 or 4 promotions in 4 years. Blood money, like you call it. I felt that it was blood money because even though I am growing, I practically was feeling like, right, is it right to fleece people like this, right? Because it was an extremely sales-driven process, and a lot of mis-selling was happening because everybody was looking at achieving their targets. Because everyone was so myopic, so short-termish in the view, right? Okay, we have to achieve this month's target. That's the only objective. There was nothing about value creation in the long run, and also there was no focus on customer. Absolutely. Customer was like a sheep, needs to be slaughtered. So I guess that actually drove me away from insurance, and actually I would say that was a blessing in disguise. Because after that I felt that I have to align with something which I believe right in, and that's where my journey of early stage startups and purpose-driven businesses came into picture. After that, never worked in any organization where I could not align with the purpose. Absolutely. Whether there was mis-selling forced you out of insurance, and mis-selling actually forced me into INCA. INCA was born because of certain people. I don't know whether you know Nikhil, who was a part of my class. Nikhil, I don't remember his full name, but Nikhil's parents were missold, and Chilka, who's my batchmate in Lachu, she was talking about this case. And then there were a few more cases that came out. And that's when I suddenly realized that being a part of the industry, sometimes you don't realize the kind of mis-selling that's prevalent. Only when you're on the ground, you realize, अरे ये भी हो रहा है. No, I guess आप जो कह रहे हैं ना वो एकदम सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2008, 9, 10 उस टाइम तो इंश्योरेंस रेगुलेशंस भी इवॉल्व हो रहे थे, बिकॉज लाइक इंश्योरेंस ओनली गॉट deregulated in 2000. Right? So insurance act only came around that time. Insurance companies को खुद को भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं. It was just about building the business at that point of time. I guess things have moved a lot and improved a lot. Yes. Because now regulators also learned a lot over the last 20 years of experience. Correct. Now, so I guess the regulations have become much tighter. Yes. So the level of mis-selling which was happening in those periods and level of mis-selling which happens today is I guess the quality of mis-selling is far lower. I think the story of mis-selling has changed. Yeah, but the mis-selling, mis-selling तो आज भी हो रही है. करने वाले को आप रोक नहीं सकते. आप रोक नहीं सकते हैं. लेकिन वो क्या है ना कि regulators become smarter and people have become smarter because of actually
social media, technology becoming a lot more accessible. और अब यूट्यूब पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इंस्टाग्राम इस पे भी आ रहे हैं, राइट, एंड पीपल लाइक यू हु आर ट्राइंग टू एजुकेट, राइट, एटलीस्ट. अदरवाइज पहले क्या होता था, अच्छा कौन है, अच्छा ये हमारे कोई कज़न है, ये हमारे अंकल हैं. इनफैक्ट मैंने खुद ने, आई वुड से, आप दूसरे का छोड़ो, मैं अपना खुद का बताता हूँ. मैंने जब मैं इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करने से पहले पापा ने मुझे एक इंश्योरेंस दिलवाया, बिकॉज इट वाज LIC जीवन आनंद, राइट. और मेरे ख्याल से बीइंग इवन विद अ फाइनेंस गाय, मैंने अच्छा पापा दिला रहे हैं तो ले लेते हैं टाइप. It was a 25-year product. I had to pay premium for 25 years. It will give me some returns. I guess I discontinued the policy as soon as I came into insurance. The first thing in the first year, because I was not from an insurance background, so when I read the regulations, I read the products, understood the math behind it, I realized, boss, I have taken a wrong product. I let the first 2 years premium grow. Third year, I said, let the policy lapse. Absolutely. Why would I continue to pay for 25 years? Even I would just put it in, take a term insurance. I took a term insurance. Yes. And I said, I will just put that same money in PPF. That will give me a better return. Absolutely. So I recall this thought in even my head when I discontinued that policy. Right? So I guess earlier it was more about reference. Uncle बोल रहे हैं तो दे दो. Plus the other thing which I learned was non-disclosure. मतलब, and I was telling you the other day, right, तो हम प्रपोजल भर रहे थे या कोई भरता है तो सब बोलते हैं, अच्छा आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो लिखो मत, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो थोड़ा कम लिख दो. कल अपनी जो बात हो रही थी, हाँ, उसका रीज़न क्या है कि ना इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा या आपको इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा, बट आपको फिर क्लेम भी नहीं मिलेगा. आपको इंश्योरेंस तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नॉन डिस्क्लोजर, आप इनकरेक्ट डिस्क्लोजर दे रहे हो, आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा. नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड दिस, एंड आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेकुनेस और फ्रॉम एन एजुकेशन परस्पेक्टिव. पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मैं 10,000 रुपये ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, बट मेरे को क्लेम मिलने की सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. बट अगर मैं अगर नॉन डिस्क्लोजर करूँगा, मैं गलत डिस्क्लोजर दे दूँगा, तो मेरे को शायद वो क्लेम रिजेक्ट हो जाए. बिकॉज आई नो ऑफ पीपल जिन्होंने PP की कंडीशन है उनको, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया. हाँ, और वो जब अनफॉर्चुनेटली द पर्सन पास्ड अवे, देन ऑब्वियसली लार्ज क्लेम था, इन्वेस्टिगेशन हुई और कहीं मेडिकल रिकॉर्ड में निकल गया कि उनको BP की प्रॉब्लम थी और डिस्क्लोज नहीं थी. क्लेम निकलता है. इनफैक्ट आई जॉइंड HDFC लाइफ 2019 की बात है, जस्ट बिफोर कोविड, फ्यू मंथ्स बिफोर कोविड. मैं ज्वाइन करते ही जो रिलेशनशिप पहले मेरे को हैंड ओवर किया, उसमें सबसे बोला मेरे बॉस ने कि इस कंपनी का CEO आ रहा है, इस पार्टनर था डिस्ट्रीब्यूटर, उसका अपन ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है. मैं कहा क्या हो गया? कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर, हार्ट इशू था, उसको सर्जरी हो रखी थी, हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई, बट उसने जब पॉलिसी खरीदी उसने कहा टिक 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 टिक. So then I sat with the CEO of this new early stage startup and I was explaining कि सर नॉन डिस्क्लोजर है. तो उसने कहा कि वो तो मेरा सेल्समैन ने भरा है, वो कस्टमर थोड़ी पढ़ता है, कस्टमर तो साइन करके चेक दे देता है, हमने सिर्फ टिक 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 कर देते हैं. सो नाउ आई नीड मनी. सो मैंने कहा सर आप जब नाउ अगेन इसमें कस्टमर और उसकी फैमिली की क्या गलती है? गलती तो देखिए सिंपल सी गलती ये है कि आप वो बोलते हैं ना, जिस चीज़ में साइन कर रहे हो उससे पहले पढ़ लो. हाँ. तो प्रॉब्लम है जो सेल्स करने आता है उसका ऑब्जेक्टिव आपसे सेल्स करवाना है. करेक्ट. उसको आपको प्रोडक्ट नहीं समझाना है. दैट इज़ वेयर कंसल्टेटिव सेलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस स्पेस. द प्रॉब्लम इज ज़्यादातर 90% लोगों को तो शायद प्रोडक्ट के खुद के फीचर्स नहीं पता होता है, क्योंकि वो सेल्स करने आए हैं, वो आपसे चेक लेने आए हैं, आपसे RTGS करवाने, NEFT UPI आज की डेट में, तो उनको पैसा लेना है, उनको आपको प्रोडक्ट समझाने का वो अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. राइट. सो आई गेस दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम. और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे क्लेम्स आएंगे फ्यूचर के अंदर, बिकॉज इंडिया इज स्टिल यंग, बट ऐसे क्लेम्स आएंगे जहाँ पर नॉन डिस्क्लोजर विल बी द बिगेस्ट रीजन फॉर रिजेक्शन. एब्सोल्युटली. बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज कि सेल्स वाले ने जो फॉर्म भरा है वो उनकी रियलिटी हो गई इन द इंश्योरेंस सिस्टम. फॉर्म वाले जो आप बता रहे हो ना, तो इंश्योरेंस में बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत वेरिएंट्स होते हैं. टर्म में भी आप देखिए, किसी भी कंपनी का आप टर्म उठाइए, कम से कम 12-13 वेरिएंट्स होते हैं. रिटर्न ऑफ प्रीमियम होगा, इतने दिन होगा, ऐसे होगा, किसी में क्रिटिकल इलनेस है, किसी में एक्सीडेंटल है. सो यू अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. इंश्योरेंस सेल्स वाला जो आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको सारे वेरिएंट्स और सारे प्रोडक्ट्स भी नहीं पता होंगे.
वो एक बट नेचुरल फीचर है, ह्यूमन टेंडेंसी, उसको एक दो याद रहते हैं, वो हर जने को वो एक दो बेच रहा जिस होता पे स्कीम चल रही होती है, मैं तो या जिस पे स्कीम चल रही होती है। जो इंसेंटिव ड्राइव द वर्ल्ड, राइट। अगर इंसेंटिव है तो वही सेल करेगा। करेक्ट। आज अगर स्कीम चलती थी, बिकॉज आई हैव वर्कड इन इंश्योरेंस, आपको भी पता है करेक्ट कि राइट कोई प्रोडक्ट पुश करना होता है तो सेल्स चैनल, सेल्स फनल में, अच्छा आज इस प्रोडक्ट पे ये इंसेंटिव है, आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा, ज़्यादा आज इंसेंटिव 2x की कर है, हाँ 2x के कर है, आपको थाईलैंड की ट्रिप मिलेगी, बाली की ट्रिप मिलेगी, अगर आपने इतने पी कर लिया, पॉलिसीज कर ली। सो आई गेस इंसेंटिव ड्राइव एवरीथिंग। इंसेंटिव ड्राइव एवरीथिंग। सो आई गेस जब तक इंसेंटिव ड्रिवन ही इंश्योरेंस है तब तक आपको डिफरेंशिएटेड प्लेयर की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी, मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। इंसेंटिव्स होने चाहिए बट अलाइंड टू द कस्टमर्स नीड हो। हाँ, मतलब मैं अगर सेल्स टारगेट पे अगर आप ये करें कि इतने कस्टमर्स को आप एडवाइस करो, या आपने कितने कस्टमर से एडवाइस पे क्या फीडबैक, एट द मिनट यू से कि यही प्रोडक्ट बेचो और इतना, तो मिसलाइन हो जाता है। बट एडवाइजरी मतलब क्या होता है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्स एंगल से देख रहा हूँ। आप अगर सेल्स वाले को कुछ भी इंसेंटिव नहीं दोगे तो शायद वो पूरा ही डिसंगेज हो जाए। सो यू हैव टू डिज़ाइन सम एंगेजमेंट, but it should be aligned with the customer's need, not with the sales. Exactly. Some target has to be given, otherwise they are like a plug chicken, उनको पता नहीं होगा किधर जाना है। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि आप एक एडवाइजरी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट, तो आपके लिए वो सही एलिमेंट है। हाँ। इंश्योरेंस कंपनी को क्योंकि उनको टारगेट प्रीमियम का अगर है, हाँ। और उनका कुछ सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स, करेक्ट, बिकॉज ऑफ एक्चुअल रीजंस एंड व्हाटएवर प्राइसिंग जो भी प्रोडक्ट उन्होंने डिज़ाइन किया होगा, तो उनके लिए क्योंकि वो सेल्स या टॉप लाइन ड्रिवन पूरा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोई 10 साल का नहीं सोच रहा है करेक्ट कि मेरी क्वालिटी ऑफ बुक क्या है। जैसे हमें लेंडिंग में भी यही होता है, क्वालिटी ऑफ बुक क्या है, सेम क्वालिटी ऑफ मेरा इंश्योरेंस पोर्टफोलियो क्या है, राइट। नॉट अभी तो फिर भी रिलेटिवली मच बेटर अवेयरनेस है इन चीज़ों की, लेकिन पहले तो ये था ही नहीं। लॉट ऑफ मतलब आपको पता था 13 मंथ जैसे परसिस्टेंसी कहा जाता है, लॉट ऑफ पीपल वुड बेसिकली नॉट इवन रिन्यू। आई वाज वन ऑफ देम, मैं खुद रिन्यू नहीं करता था, राइट नहीं किया है मैंने इंश्योरेंस को, बिकॉज आई नेवर अंडरस्टूड कि मुझे क्या सेल किया जा रहा है, राइट। जिस दिन मुझे पता पड़ गया, मैंने सबसे पहले वो बोला कि सर आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, करेक्ट, इवन इफ इट मेंट मेरा 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया होगा, बट दैट वाज फाइन। लंबा लॉस से तो बचे एटलीस्ट, या एग्जैक्टली। सो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन में काफ़ी हो सकते हैं, बट लैक ऑफ टाइम के हिसाब से मैं दो चीज़ टुवर्ड्स द एंड। वन, यू मीट अ लॉट ऑफ फाउंडर्स GMC के एंगल से, प्लस यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। नॉन GMC फाउंडर्स भी यू वुड बी इंटरेक्टिंग विद, दे वुड बी आस्किंग कि क्या करना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो एक चीज़ जो हमने सुनी है बहुत फाउंडर्स से, वो ये कि सैलरीज रुक जाती हैं, तो टर्म इंश्योरेंस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि सैलरी स्लिप मांगती है इंश्योरेंस कंपनी। सो वी हैव डिज़ाइंड समथिंग फॉर सच फाउंडर्स, बट विद GMC वी वांट टू डू समथिंग मोर। तो first of all, any thoughts that you have on this problem for founders which you have seen? No, I would say कि ये एक रियल प्रॉब्लम है, बिकॉज खासकर हम तो सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में है, तो वहाँ तो वैसे भी एक और ही बहुत, बिकॉज दे आर जनरली ट्राइंग टू सॉल्व मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। करेक्ट। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है जो एक D2C ब्रांड बना रहा है, करेक्ट, राइट। वो कोई शायद स्कूल एजुकेशन उस एरिया में फोकस कर रहा है, हेल्थ केयर में फोकस कर रहा है, तो वहाँ पर तो वैसे भी उनका जेस्टेशन पीरियड ऑफ ए बिजनेस इज लॉन्गर। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सो उनके लिए तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कभी मार्केट रेट के शायद सैलरीज आने में उनको 3 से 5 साल लग जाते हैं, बिकॉज वो 1-2 फंडिंग राउंड होंगे, बिजनेसेस 15, 20, 25, 30 करोड़ का स्केल बनेगा, तो वो 3 से 5 साल इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो। वी हैव सीन बिजनेसेस जो 10-10 साल बाद ही 5, 6, 7 करोड़ के रेवेन्यू पर ही अटक गए हैं, बिकॉज जस्ट कांट स्केल। तो उन फाउंडर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्होंने इट्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोल लो, उसमें वो आ गए हैं, बट दे आर रिस्किंग देयर लाइफ एज वेल एज देयर फ्यूचर, फैमिलीज फ्यूचर एज वेल, राइट। तो ये एक बहुत, आई वुड से कि ये बहुत बड़ा गैप है, करेक्ट, वेयर आई फील बिकॉज दे आर नॉट पेड, बिकॉज एक तो इट्स लाइक अ मल्टीपल लेवल्स ऑफ वैमी फॉर देम, दे आर नॉट पेड एज पर द मार्केट, एब्सोल्युटली, राइट, because they are in a difficult sector, it takes time, but it's a choice. और अगर उनको कुछ हो जाता है, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली वी हैव एक्सपीरियंस दिस, वन ऑफ आवर पोर्टफोलियो कंपनीज co-founder, she was a female, she passed away during COVID. Oh no. She passed away during COVID. She had 2 young kids. So
probably the saving grace was only that her husband was also one of the co-founders of the business. Yeah. So and the business did fairly well. We facilitated an exit to a large tech company, and they are financially secure. But if she were the sole earning member, had extremely young kids, less than 10, both the kids, right? Things would have been extremely difficult. Absolutely. Right? So I believe it can happen with anyone. Yeah. And she was ex-engineer in a large tech company, a global tech company. Correct. She chose the path of entrepreneurship, solving for the problems at the last mile. Yeah. Excellent. She was sort of the guiding light of the organization. But that's why I completely agree. Entrepreneurs need to have adequate life insurance. Correct. Because they are far more valuable than the metric of the salary slip. Absolutely. That's unfortunate because right, because of insurance background, right, there's something called human life value. Yeah. Which is the barometer for actually giving in insurance. Exactly. Which is 10x or 20x of your salary or your annual income. Correct. But if somebody's salary is 50,000 or a lakh, but they're doing some really high impact work because of the sector they are working in. So I believe it is extremely, extremely important that these founders and teams get adequate insurance and not based on their salary slips. Absolutely. That's exactly what we've built, and we'll go it further. So 3 things from Inca before the podcast started, we had discussed at the team, and we would launch today in the podcast and take it everywhere. One, GMC backed or maybe connected through GMC. So it may not be backed by GMC, but if you have your connections, someone who wants to come as a founder, we can go up to 10 crores of sum assured. Depending on the paperwork, medical requirements, and there are certain risk parameters, but there would be cases up to 10, maybe 1, 2, 3 CR depending on the need and those papers, we can go ahead. No salary slips required, 1. 2, even more important than this product is their own understanding. They need to understand why they need insurance. And what kind of insurance and things like that. So my number would be published there, you have it, and we'll put it across. I will be more than happy to do a one-on-one 45-minute call with all these founders to take an analysis of their entire need, and this could be a Zoom call, voice call, whatever they are comfortable with. I am accessible to all these founders directly. And 3, my co-founder Abhay, who also brings over a decade of insurance experience and everything, he would do personally master classes for companies of all the employees where your founders are running, because the employees also need basic understanding, basically, small health insurance or something, because, I was also looking at, like you saw the Japan data and everything, Japanese data. We saw in India every year close to 2 crore people go below poverty line because of medical expenses. So people who are employees also, if not founders, they need adequate cover for those medical emergency days. No, it is extremely important. I completely agree, and that's why I guess we discussed, right? This is a sector which is underserved from insurance perspective. Correct. Because even the employees, right, when they are working in socially inclined organizations who are for profit, but they are trying to solve for a social cause, right? So they need to have the safety net. So I guess it is important to make them aware. Exactly. That is what probably we can provide access to. And be objective in helping them also learn the value of insurance in this entire process. All these are basically educational things we'll do. Even if they don't want to buy from us, that's fine. They can buy from anywhere. But education is important before you transact. So in fact at Inca also we say, pehle samjho phir kharido. Don't buy till the time you don't understand from anywhere. So that's super important. No, I completely agree, and we would be very, very happy to open our entire portfolio, current portfolio, our previous portfolio as well, companies which have exited. Right. Because India, we would have anywhere between 50 to 70 currently active portfolio direct and indirect through the funds as well. We're happy to engage, and we'll get the team to connect together. That'll be great. Done. Thank you. And thank you. Pleasure. Pleasure. Thanks. Bye.